स्टूडेंट्स, तो वेलकम टू द फर्स्ट उमंग सेशन। इतने सारे रिक्वेस्ट, इतने सारे कमेंट्स आए हैं मुझे दैट मैम व्हेन वुड एसएसटी उमंग विल स्टार्ट, सो टुडे इट इज स्टार्टिंग। एंड यस, द सरप्राइज इज कि एसएसटी उमंग इस बार सिर्फ क्लास 10th के लिए नहीं है, इट इज ऑल्सो फॉर क्लास 9th। सो सारे क्लास 9th और 10th के बच्चे, डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू द चैनल आफ्टर द वीडियो और ड्यूरिंग द वीडियो, क्योंकि सारा सिलेबस क्लास 9th के 22 चैप्टर्स एंड क्लास 10th के 25 चैप्टर्स, ऑल द चैप्टर्स वी वुड बी डूइंग थ्रू दिस उमंग सीरीज। पैटर्न में समझा देती हूँ। अच्छा, पैटर्न समझाने से पहले मैं अपने आप को इंट्रोड्यूस कर देती हूँ। मेरा नाम है शुभम पाठक। आई एम द सोशल साइंस एक्सपर्ट एट वेदांतु एंड आई एम अ ग्रेजुएट एंड पोस्ट ग्रेजुएट इन सोशल साइंस फ्रॉम दिल्ली यूनिवर्सिटी। एंड यस, नाउ आई विल टेल यू व्हाट इज उमंग एंड हाउ उमंग इज गोइंग टू बी फॉर सोशल साइंसेस। तो स्पेसिफिकली सोशल साइंस के उमंग में we would be doing everything that is there in your chapter, every important topic with good amount of explanation. और last का जो एक सेशन होगा after every chapter, the last session would be there for your mentee quiz, क्योंकि पता तो चलना चाहिए ना कितना सीखा। And one more special thing is there, अच्छा, that I will tell you at the end of the session. उसके लिए पूरा सेशन देखना पड़ेगा। आज का चैप्टर है उमंग सीरीज का राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप। पहले मैं आपको नाम समझा देती हूँ। लेट्स ब्रेक डाउन द नेम ऑफ द चैप्टर, Rise of Nationalism in Europe. Bacha, this chapter talks about how nationalism rose up and how nationalism gave rise to our easy peasy nation states. ठीक है, तो ये दो चीजें हमेशा याद रखनी है। The force of the chapter is nationalism and the end result that you will get is your nation state. Now, everything in between the chapter is just a story to get to the nation state. So now let's get started. आज के सेशन में आपको मिलेगा फ्रेंच रेवोल्यूशन, नेशन स्टेट की डेफिनेशन एंड नेपोलियन, हाउ he came to France and how he curated this Napoleonic code, and you will also get to know the Habsburg Empire example written in your NCERT. So please watch it and don't forget to like the video if you like it. Now चलो स्टार्ट करते हैं। 19th सेंचुरी की बात चल रही है। 19th सेंचुरी, सबसे पहले तो बनाई से 19th सेंचुरी, आई मीन 1800 to 1900, because in century we always go backwards. Okay, so in 19th century there was a new force in the Europe. This new force was not a weapon, not a gun, not a tank. It was a feeling, a emotion. Can you imagine? Yes, a feeling, a emotion, and that feeling and emotion is known as nationalism. With this feeling, जो हमें end product मिला अपने लास्ट में, वो मिला nation state. अब before we start pondering upon this subject, the question arises, क्या nationalism आने से पहले हमारे पास nation states नहीं थी? और nation states नहीं थी तो था क्या आखिर? So let's get to that question. Yes, before nationalism came into the picture, we did not have nation state. Instead, we had multinational dynastic empire. क्या मतलब है इसका? मतलब ऐसे empires थे जहां पे dynasty after dynasties, the rulers were coming generation after generation from the same dynasty, and they were multinational. People belonging to different ethnicities, different geographical variation, different languages, they were a part of these empires. थोड़े बहुत हमें मॉडर्न स्टेट के कैरेक्टरिस्टिक्स भी देखने को मिलते थे, बट ओवरऑल इफ आई टेल यू, देयर वाज नॉट अ सिंगल नेशन स्टेट। इनफैक्ट फ्रेंच रेवोल्यूशन वो पहला रेवोल्यूशन था जिसके बाद नेशनलिज्म फीलिंग वाज एक्नॉलेज्ड इन द वर्ल्ड एंड इन द यूरोप, एंड वी गॉट आवर नेशन स्टेट। सो अब बात आती है कि नेशन स्टेट होता क्या? Easy peasy. If you want to spot a nation state, you just have to look for three things. Thing number one, point number one, sense of common identity. Why go to the Europe? Let's consider India's example. No, we, मैं, आप, आपके parents, मेरे parents, everybody that we know in India have a common identity, and that common identity is that we all are Indians, right? Point number two, shared history. मेरी भी वही हिस्ट्री रही है जो आपकी हिस्ट्री रही है। क्यों? क्योंकि हम दोनों का नेशन सेम है। My history and your history is all same because we both have the same nation state, right? Point number three, struggle. My forefathers have also struggled to get this country independent. Your forefathers have also struggled for the same thing. So we have a common struggle also. With common identity, with shared history, and with the common struggle, we get our nation state. तो फिर मॉडर्न स्टेट क्या होता है? मॉडर्न स्टेट में नेशन स्टेट की सिर्फ एक ही क्वालिटी होती है। मॉडर्न स्टेट हैव सेंट्रलाइज्ड पावर, सेंट्रलाइज्ड सॉवरेनिटी, सेंट्रलाइज्ड पॉलिटिकल अथॉरिटी, बट नेशन स्टेट हैज मच मोर.
What is that much more? I have already told you those 3 points. अच्छा, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जहां जहां मुझे लगेगा टॉपिक इंपॉर्टेंट है मैं आपको बताती भी रहूंगी. ओके, चलो आगे चलते हैं. फ्रेंच रेवोल्यूशन. अच्छा हाँ, एक और इंपॉर्टेंट बात है. ऑल द चिल्ड्रन हु कीप आस्किंग मी मैम कैन वी डाउनलोड योर उमंग सीरीज एज नोट्स? Yes, you can. These are your notes. You can download it as notes. Okay. Now moving on to the French Revolution. जैसे कि मैंने बताया, French Revolution was the first ever clear expression. Clear. इससे पहले भी हुआ है, but this was the first clearest expression of nationalism. Now, बच्चा, you have to understand. Before that, the political authority was also with somebody else, and also the unity among the people was not there. Political authority, which is also known as sovereignty. If we talk only of French Revolution, the political authority was with King Louis the 16th. Yes, you are right. और उसके बाद French Revolution के बाद वो political authority कहाँ चली गई? It went on to the body of French citizen. So ये miracle हुआ कैसे? How did this miracle happen? This miracle happened because of French revolutionaries, and they took it upon their shoulders कि उन्हें ये भावना instill करनी ही है. They have to instill the feeling of nationalism in everybody who is there in France. तो कैसे किया? Obviously इतना innovative plan था, तो innovative ideas चाहिए थे. Let's look at those ideas. I'm giving you these whole set of ideas that you can write in your 5-marker question also. Point number 1, new phrases. Les citoyens and la patrie. So, bacha, before French Revolution, people could not relate to the land. They only thought of France as a piece of land. They were not relating to it. So, revolutionaries ने एक ये revolutionary concept निकाला कि this land is our la patrie, this is our fatherland, and we are its citizens. So, can you now see that there is a relationship between the land and the people? Amazing, isn't it? Point number 2, French flag. Now, if we want a revolution, अगर हमें revolution चाहिए, we want a nation state, obviously we are not going to go ahead with the former royal flag, जो है testimony एक monarchy. तो इसीलिए French revolutionaries came up with a new tricolor flag of the France. Point number 3, National Assembly. बच्चा, everything needs to have political representation. सब चीज को चाहिए होता है. So people even realized it, and to make the constitution, to get French people its freedom, French citizens came up with National Assembly, जिसका पहले नाम क्या था? Estates General. Point number 4, obviously एक ही कंट्री की बात कर रहे हैं, हम कंट्री बनाने की बात कर रहे हैं, so we can't keep internal taxes, so they were abolished. And इसी के साथ साथ the French revolutionaries adopted uniform weighing and measure system so that everybody in the country is economically on the same page. Amazing, right? Then now next point मैं थोड़ा agree नहीं करती हूँ, but this point definitely played in favor of the French revolutionaries. So regional dialects, regional variations जो थी French language में, they were discouraged. And on the top of it, French was imposed as the common language of the nation. Because the idea was, French revolutionaries को लगा अगर हम एक language में बात करेंगे सब लोग तो unity ज़्यादा बढ़ेगी. ठीक है? Last point is my favorite. चलो इंडिया के एग्जाम्पल से समझाती हूँ. वंदे मातरम, जनगण मन. Now we know them as our national anthem and national song. But once they were not the national anthem or national song, right? Once they were only hymns and only songs, और जो बनाए जाते थे इसलिए ताकि हम लोग united feel कर सके, right? Similarly, French revolutionaries came up with new songs, new poems, new hymns, so that everybody who sings it, जो भी वो गाना गाएगा, they should feel connected and united. How beautiful, right? So all of these were measures taken to instill the collective identity in the people of the France. Now let's talk about ये फ्रांस का था ना ये सब कुछ. How did this idea or how did these ideas, if I should say, they spread throughout the Europe? कैसे हुआ ये miracle? अब ये बड़ा miracle है. So बच्चा, इसमें 2-3 लोगों का हाथ था. Ones were definitely your French revolutionary, they were the force of it. Second were your French army men. तो जहां जहां फ्रेंच आर्मी जाती थी, wherever French army used to go, they used to take the ideas of the French Revolution, they used to take the ideas of the nation state. तो धीरे धीरे करके स्प्रेड होता गया पूरे यूरोप में. Also, Jacobin Club, do you remember it? Class 9th, very important question of class 9th. Yes, the most famous political club of the French society, Jacobin Club, that also became a force in spreading the idea of nationalism. Political awareness was being created among the citizens, right?
चलो फिर एकदम से एनसीईआरटी में हम जंप करते हैं नेपोलियन में। सो थोड़ा सा मैं बैक स्टोरी बता देती हूँ। हु वाज नेपोलियन? नेपोलियन बच्चा वाज द फ्रेंच मिलिट्री डिक्टेटर, and when France was boiling and France was all revolutionary, the neighboring countries were feeling threatened, so they were attacking the France. और हमारा जो हीरो है स्टोरी का नेपोलियन, he saved the France from those neighboring countries. बचा तो लिया, but after saving the France he definitely destroyed the democracy. democracy destroy कर दी और reintroduce कर दी monarchy. थोड़ा गुड थोड़ा बैड, half hero half villain, but he was not that buddhu, he was not that cruel. He came up with a very very amazing administrative system which is known as civil code of 1804. One mark, very important question. civil code का दूसरा नाम क्या होता है? The other name of civil code is Napoleonic code, right? चलो अब ये जो स्लाइड दिख रही है, मैं चाहती हूँ each one of you should take a screenshot of this slide. Why? Because look at the slide. Option number A, no, point number 1, it is very beautiful. Point number 2, it is very concise. इस एक स्क्रीनशॉट से पूरा नेपोलियनिक कोड आपको समझ आ जाएगा. इसमें भी पॉइंट नंबर 1 करते हैं. तो हमारे नेपोलियन ने सबसे पहले अमाउंट रिड्यूस किया करेंसी नंबर्स का. सो देयर वर सो मेनी करेंसीज इन द फ्रेंच लैंड आल्सो, इन द यूरोप आल्सो. ही रिड्यूस्ड द अमाउंट ऑफ द करेंसी, ही मेड अ कॉमन नेशनल करेंसी. पॉइंट नंबर 2, ही सेट अप इक्वालिटी बिफोर लॉ. इक्वालिटी बिफोर लॉ मतलब क्या है इसका? मतलब ये है बच्चों कि लॉ जो है अनबायस्ड होना चाहिए. लॉ शुड लुक फॉर द क्राइम एंड नॉट फॉर द क्रिमिनल. पॉइंट नंबर 3, नो प्रिविलेजेस बाय बर्थ. याद करो क्लास 9 देयर वर फर्स्ट स्टेट, सेकंड स्टेट, थर्ड स्टेट. First state and second state used to enjoy privileges based on the birth. So Napoleon abolished all of them. Amazing. Like I said, half hero, half villain. Then point number 4, secured the right to property. अच्छा बच्चों, क्या होता था ना पहले यूरोप में, इन द अर्लियर टाइम्स इन यूरोप द प्रॉपर्टी वाज कन्फाइडेड इनटू द हैंड्स ऑफ फ्यू पीपल. कुछ ही लोगों के हाथ में प्रॉपर्टी होती थी. बड़े बड़े लार्ज लैंड ओनर्स हुआ करते थे. सो नेपोलियन सेड व्हाट इज दिस कॉन्सेप्ट? इफ यू आर एजुकेटेड, इफ यू आर मेकिंग मनी, इफ यू आर डूइंग हार्ड वर्क एंड गेनिंग योर ओन प्रॉपर्टी, यू शुड हैव द राइट टू कीप इट. तो राइट टू प्राइवेट प्रॉपर्टी, राइट टू प्रॉपर्टी सिक्योर करवाया आपका नेपोलियन ने. Then point number 5, feudal system. Now I'm not going to go into the details of the feudal system. You guys have already studied in class 9. Feudal system जो बहुत unjust था for the poor peasants, that was abolished. And guild restrictions, जिसके बारे में हम age of industrialization में अच्छे से पढ़ेंगे, those guild restrictions were also abolished. है ना? अब transport and communication. Bacha, every country needs good transportation and communication for its development. Napoleon realized it and Napoleon made sure that transport and communication is improved in the French land. Also standardized weights and measure. If 1 kg is 1000 gram in my city in India, it should be 1000 grams in your city also. No, the same was the logic and Napoleon did it. So अब आप पूछोगे मैम इतना अच्छा सिविल कोड था, such a great civil code, then people must be very elated about it. Yes, you are right. Initially, wherever Napoleon used to go, wherever French armies used to go, people used to be hip hip hooray. People used to think that French armies are the flag bearers of liberty, freedom, harbingers of liberty and freedom. Switzerland, Holland, Belgium, everywhere where French armies would go, people will welcome them. But later they realized कि इतना भी अच्छा नहीं है हमारा हीरो. The initial enthusiasm soon turned into hostility when they realized कि कॉन्स जो है नेपोलियन के होने के वो प्रोज से काफी ज्यादा है. When the people weighed pros and cons outweighed the pros. So कौन से कॉन्स थे? सबसे पहला पॉइंट है कि देखो नेपोलियन कुछ भी करे, वट एवर सिविल कोड इज डूइंग, बट पॉलिटिकल फ्रीडम वॉज नॉट देयर विद द पीपल. पॉइंट नंबर 2 इज censorship was imposed. What is censorship? Suppression of emotions, expression, opinion. तो censorship लगा दी गई थी. Point number 3 is taxation system बढ़ा दिया गया था, टैक्स बढ़ा दिया गया था. Now you will say, ma'am, we just studied that internal taxes were abolished. Yes, those were the internal taxes. Overall taxes were definitely enhanced. Point number 4, even I forgot. Yeah, French armies. Yeah, so point number 4 is कि French armies में जबरदस्ती admission कराया जाता था. क्यों कराया जाता था? Because Napoleon was a very ambitious person. He wanted to not just,
stop at France. He wanted to go further into the Europe and be the monarch of the entire Europe. तो इस ambition के साथ, with this ambition, नेपोलियन क्या करता था, आर्मी का साइज बढ़ाने के लिए फोर्स्ड एडमिशन कराता था आर्मी में. तो ये सब जब लोगों ने देखा तो their enthusiasm was pissed and people said कि अब हमें नहीं चाहिए. We are rejecting Napoleon, we are rejecting the civil code. अब आगे वाला जो टॉपिक है एनसीईआरटी में, मेकिंग ऑफ द नेशनलिज्म इन यूरोप. बच्चों ये ऑलरेडी मैं बता चुकी हूँ, बट एनसीईआरटी हैज फर्दर एक्सप्लेन्ड इट विद एन एग्जांपल, सो वी विल गेट अहेड. So like I said, 19th century nationalism came into the picture. Let's talk 100 years later. 18th century की बात करते हैं. 18th century में nation state जैसा कोई concept नहीं था. In fact, all the people were under the rule of autocratic monarch. Autocratic monarch मतलब absolute rule by one person. And you know, these people were very different. They used to speak different languages. They used to wear different clothes. They used to conduct themselves very differently. Their culture was different. Identity was different. और इसी वजह से they used to have a problem in, you know, relating with each other. तो आपस की unity तो थी ही नहीं. Then इसी का एक example है Habsburg Empire. Your NCERT tells us that Habsburg Empire was like a patchwork, right? Patchwork means there were so many different people. People from Austria, Hungary, French-speaking people, Alpine, Austria, Sudetenland, Bohemia, so on and so forth. You don't have to go into a lot of detail of Habsburg Empire. You just have to understand that it was like a patchwork. And people were not having any sort of unity. कोई unity नहीं थी आपस में, political unity नहीं थी. People never used to, you know, feel connected with each other. In fact, they used to more relate to the ruler. उनकी allegiance जो है ना, राजा साहब के साथ ज्यादा लाई करती थी, emperor के साथ ज्यादा लाई करती थी, आपस में थोड़ी कम लाई करती थी. तो ये तो हो गया आज का सेशन. अगले सेशन में we will study about industrialization, we will study about liberalism, conservative, revolutionaries. If you like the explanation, do hit the like button. I have tried to speak in English also, Hindi also. सारी मतलब जो जितनी लैंग्वेजेस मुझे आती है, हिंदी इंग्लिश दोनों में बोलने की कोशिश की है मैंने, एंड आई होप इट वर्कड. अब मैं बता देती हूँ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन. यही था आपका लास्ट में आने वाला सरप्राइज, दैट विद एवरी सेशन ऑफ उमंग एसएसटी आई विल बी प्रोवाइडिंग यू विद द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आल्सो. लेकिन कैच ये है कि इन क्वेश्चंस के आंसर्स आपको नेक्स्ट सेशन में मिला करेंगे, ठीक है? सो यू हैव टू कमेंट बिलो माय वीडियो द आंसर्स टू दीज क्वेश्चंस and then I will tell you if they were right or not. So your first important question is कि in which among the following states a centralized power exercised sovereign control over a territory. कौन सी स्टेट में centralized power होता है, ये बताना है आपको. फिर आपको बताना है what kind of a club is Jacobin club, fashion, political, conservative or none of the above. And एक homework question भी है, उसका आंसर भी you have to provide me in the comment section. That homework question is, who destroyed democracy in France? Adolf Hitler, Mussolini, Napoleon Bonaparte or Bismarck? So do let me know in the comments your answers. और अगर आपको लगता है कि कोई चैप्टर आपको जल्दी चाहिए, so that also you can let me know. Don't forget to subscribe the channel. Like I said, more chapters coming up. पूरे साल I will be with you and I'll make sure that you guys nail your CBSE board exams. So I'll see you next time with another session. Till then, maintain social distance, wash your hands and keep smiling. Bye bye.